Bonjour et bienvenue à French learning classes. Today in this video, I will teach you the adjective in French language. Okay, so the adjectives, what are the adjectives? Agrees with the noun it qualifies. Okay, that means it describes the qualities and characteristics of a noun. Okay, if we have a sentence in which we have noun or a adjective, so adjective in which qualifies the characteristics or quality of a noun. Okay, so now we have to look that point. First is to change the adjectives into feminine form and e is added to the masculine form. We have four forms: masculine singular, feminine singular, masculine plural and feminine plural. Okay, so इन दिस सेंटेंस हमें क्या करना होता है कि अगर हमें एडजेक्टिव को फेमिनिन फॉर्म से मैस्कुलिन फॉर्म से फेमिनिन फॉर्म में चेंज करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जस्ट ऐड एन ई ओके इन द लास्ट ऑफ द वर्ड. सो देयर इज अ एग्जाम्पल, पैती ए ग्रॉ. ओके, पैती ए ग्रॉ. सो पैती मीन्स small. Okay, petty means small. So here petty is a masculine adjective. Okay, petty means small, which means small, and it is a masculine adjective. So what we do to make it plural, to make it feminine form, okay, what we do, we just add an e, okay, in the end of the letter. So it becomes like this, petite. Okay, and this pronunciation is petite. This is petite and this is petite. Okay, we add an e for make it feminine form. And now second example is grand. Okay, grand, which means big or tall. Okay, grand means big or tall. So grand, इसमें हमें क्या करना होगा feminine बनाने के लिए, grand. Okay, grand. Here e, we add an e in the end of the word. Okay, for make it feminine form. So grand is a petite et grand is a masculine adjective here, and for make it plural, for make it feminine form, we just add an e in both of the letters. Okay, this is the second point of the adjectives. To change the adjectives into plural form, okay, as is added to the singular form. Okay, if you want to change the adjectives into plural form, then we just add as is into the singular form. ठीक है, so इसमें हमें क्या करना है, केवल as ऐड करना है if you want to make it plural. So simple. मैंने यहाँ पर same example लिए हैं. Okay, as I take the both of the example, petty, okay, which is small. So इसको फेमिनिन बनाने के लिए हमने किया था यहाँ पर जस्ट एड एन ई. ओके, पेटी, जस्ट एड एन ई, बट दिस इज मैस्कुलिन फॉर्म एंड दिस इज फेमिनिन फॉर्म. ठीक है, अब हमें अगर मैस्कुलिन प्लूरल बनाना है एंड फेमिनिन प्लूरल बनाना है, तो हमें केवल एस ऐड करना है. ठीक है, इन बोथ दी सिचुएशंस. सो जस्ट फॉर मेक इट प्लूरल वी ऐड जस्ट एस, like petty. This is masculine form. Okay, and we add just as to make it plural. ठीक है, so this is masculine plural form. And if you want to make it plural form of feminine, so we add just as also in this letter, like petite e. Okay, petite, which is feminine form, and just add an s. So this is petty masculine form, this is feminine form, this is masculine plural, and this is feminine plural. So they both are singular and they both are plural. Okay, now same as go with grand. Grand, this is feminine form. ठीक है, because हमने यहाँ पर e ऐड किया है, और इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है, so this is masculine singular, उसमें हमें simply grand. ठीक है, तो ये प्लूरल हो गए यहाँ पर बिकॉज हमने एस को ऐड किया है. और इसी तरीके से अगर हमें फेमिनिन का प्लूरल बनाना है तो हम सिंपली
ऐड कर देंगे इसमें एस, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज ग्रो and grow. This is masculine singular, this is masculine plural, and this is feminine singular, this is feminine plural. Okay, okay, so now we have an very important point. ठीक है, इसमें क्या है, beau. beau word means beautiful or handsome. ठीक है, so beau is a masculine word. beau changes to belle if the noun is in masculine form and begins with a वॉवल. ठीक है, अगर हमारी नाउन जो है वो मैस्कुलिन में होगी, मैस्कुलिन फॉर्म में होगी और वॉवल से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, तो हम बो को बेल में चेंज कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑम बेल ओम. ओके, बेल ओम विच मीन्स अ हैंडसम मैन. ठीक है, ओम मीन्स मैन, om means man. ठीक है, and means a. So belle means what? Handsome, because he is a masculine na, so that's why we use handsome. So a handsome man. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो om है वो हमारा क्या है, नाउन. ठीक है, नाउन. सो ये नाउन जो है वो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से. ठीक है ना, बिकॉज वॉवल क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू एंड साइलेंट, साइलेंट एच. ठीक है, साइलेंट एच. सो वी हैव एच हियर. ठीक है, विच इज साइलेंट इन ओम. सो एच यहाँ पर है हमारे पास, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर बिगिन हो रहा है वॉवल से वर्ड. और ऑल्सो ओम इज अ मैस्कुलिन फॉर्म. ठीक है ना, ओम मैन है तो ऑब्वियसली मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर हमें बो की जगह हम यहाँ यूज करते हैं बेल. ओके, इफ वी हैव अ वॉवल एंड ऑल्सो अ मैस्कुलिन फॉर्म, देन वी यूज बोथ, देन बोथ चेंजेस टू बेल, अ हैंडसम मैन. सो दिस आएगा अ बेल ओम. सो नाउ वी हैव सम एडजेक्टिव्स हियर. ठीक है, दिस इज सिंगुलियर एंड दिस इज प्लूरियर. So this is singular masculine form, this is singular feminine form, this is plural masculine and this is plural feminine. ठीक है, so first adjective is lay. Okay, lay, can you see that, lay, and इसको feminine बनाने के लिए, for make it feminine we have just add an e in the last of the letter. ठीक है, we just add an e because फेमिनिन में हम ओनली ई को ऐड करते हैं. नाउ प्लूरल, अब यहाँ पर दिस इज मैस्कुलिन सिंगुलर ना, सो दैट्स वाई वी जस्ट ऐड एन एस हियर टू मेक इट मैस्कुलिन प्लूरल. ओके, ओनली एस, एंड इन फेमिनिन ई एंड एस बोथ, बिकॉज फेमिनिन में हम ई को ऐड करते हैं और प्लूरल में एस को ऐड करते हैं. सो दैट्स वाई वी यूज बोथ ऑफ देम, ई एंड एस. ठीक है, इन फेमिनिन प्लूरल. सो इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड एडजेक्टिव इज इंटेलिजेंट. ओके, इंटेलिजेंट, एंड इन फेमिनिन फॉर्म इंटेलिजेंट. ओके, इंटेलिजेंट. इन मैस्कुलिन प्लूरल इंटेलिजेंट. ओके, इंटेलिजेंट, बट वी ऐड एस. एंड इन फेमिनिन प्लूरल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट. ओके, we add e and s both. Now jolie, jolie which means pretty, pretty. Okay, jolie in masculine singular, jolie we add e for to make it feminine singular. Okay, we add e, jolie, and masculine we add as, jolie, and feminine e and s both, jolie. Okay, now mauvais. Okay, mauvais, simple, and for make it feminine singular we add e. Okay, mauvaise, this is mauvais and mauvaise. After that masculine plural mauvais again. ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर हमें स्पेशली एस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी एन एस.
ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एस है तो हमें स्पेशली अलग से एस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैस्कुलिन प्लूरल हमको बनाना है और अगर मैस्कुलिन सिंगुलर में कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ऑलरेडी ई है, ठीक है, ऑलरेडी ई है, तो उसको हमें स्पेशली ई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अगर हमें फेमिनिन सिंगुलर उसे बनाना है तो। इसी तरीके से जो एस है वो हम अगेन ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इन मैस्कुलिन फॉर्म वी हैज़ एस ऑलरेडी। ओके, सो मोवे, मोवेज, मोवे अगेन मैस्कुलिन प्लूरल, एंड इन फेमिनिन प्लूरल मोवेज वी ऐड e in between I and s. Okay, we add e. Now conton, ठीक है, conton in masculine singular and in feminine singular we add e again, contant. Okay, contant, and masculine plural we add just an s, conton, and here e and s in feminine plural. Okay, so यहाँ पर हम लोग बस ये समझना है कि मैस्कुलिन फॉर्म जो होती है वो सिंपल होती है। अगर हमें फेमिनिन फॉर्म बनानी है तो हमें सिर्फ ई को ऐड करना होता है। मैस्कुलिन बनाना है तो ओनली एस को ऐड करना होता है, जिसमें एस नहीं होता। अगर मैस्कुलिन में ऑलरेडी एस है वर्ड में तो हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सेम अगर फेमिनिन में ऑलरेडी ई है मैस्कुलिन में तो हमको फेमिनिन बनाते वक्त ई को अलग से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एंड फेमिनिन प्लूरल में हमें ओनली ई एंड एस ऐड करना होता है, जस्ट सिंपल, ठीक है। I know the video is very long and you guys must be bored, so I will tell you the more about adjectives and the exercises in the adjectives part 2. So stay tuned with this video and please subscribe, like and share this video with your friends and do the practice of adjectives. Okay, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ अगर नहीं समझ आया सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, टिल देन टेक केयर और au revoir.